Okay students, so now we have to find out the magnification of a simple microscope when the image is formed at infinity. उससे पहले हम लोग यहाँ इसके जो नियर पॉइंट वाला हमने किया था, ये जो नियर पॉइंट वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर देते हैं सो दैट वी कैन रिलेट इजीली. यहाँ पे जो हमने मैग्निफिकेशन फाइंड किया वो लीनियर मैग्निफिकेशन के तरीके से फाइंड किया. ना इफ़ वी वांट टू फाइंड इट आउट बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो उससे भी हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो पहले तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा. सो लेट अस से कि ये वाला जो डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसी के अंदर से हम देखते हैं कि हियर यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है विथ द इमेज, एज यू कैन सी व्हेन द इमेज इज एट डी, दैट एंगल वी कॉल इट बीटा, यानी कि ये एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी. सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, जब ऑब्जेक्ट को भी हम यहीं पर यानी कहाँ पर कि डी पर रखते हैं, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे. सो सी दिस इज योर एच एंड दिस इज एच डैश, सो एच डैश बाय एच, सो इन दैट वे वी कैन कंपेयर. सो हियर दिस एंगल विच वी गेट is alpha, and so clearly we now can do what we now can do is we can find out the angular magnification, which will be given as m is equals to the angle subtended by image at I when it is at नियर पॉइंट, इट यानी कि इमेज जब नियर पॉइंट पे है, डिवाइडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज आल्सो एट द नियर पॉइंट. सो वी गेट इट एज बीटा अपॉन alpha. Now what is beta, what is alpha in this case? So we can find it out with the help of 10 beta and 10 alpha. So here we have from the diagram 10 beta, as you can see in this diagram 10 beta is h dash upon d because v is equals to d. So we get 10 beta as h dash upon d, whereas if we want to find out 10 alpha, so 10 alpha can be found out as this is h upon, again it's d only, so 10 alpha is h by d. So because the angles are very small, we can consider 10 beta as simply equal to beta, which is h dash by d, and 10 alpha as simply alpha, which is again h by d. So if we divide both of them, we get the magnification as the linear magnification only, h dash by d divided by h by d. This dd will get cancelled, and what we get is the linear magnification, which is equal to v by u, and which we have already done how to find out the value of it. Now let us move on to the image formed at infinity. So next is the case when the image is at infinity. So again we can use the formula for angular magnification. This time too we have to use angular magnification only because the object is at infinity, so its height we don't know, and so we can say it is the angle subtended by the image at your eye when the image is at infinity. Whereas
divided by the angle subtended by the object at I when it is at near point. So if you want to compare something, तो एक को हमें एक ही पर्टिकुलर जगह पे रखना पड़ेगा. जब सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमने इमेज को ऑब्जेक्ट को डी के ऊपर रखकर कंपेयर किया था, तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट के ऊपर के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा. एंड सो मैग्निफिकेशन विल बी देन बीटा बाय अल्फा. नाउ लेट अस सी. यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा, क्योंकि वो नीचे वाले पॉइंट तो उसके सेम ही है. एंड दैट वाज इक्वल टू alpha, which is equal to h by d, but this time beta will change. Why beta will change? Because this is angle subtended by the image at I when the image is at infinity. So let us just draw it over here to understand it clearly. ये जब इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा गया होता है. सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और उस वक्त इमेज जो है वो बहुत ही दूर इन्फिनिटी पे बनती है. सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. एकदम दूर इन्फिनिटी के ऊपर जो है वो इमेज बन रही है. सो ये इट गोज टिल इन्फिनिटी लाइक दिस. सो दिस एंगल विच वी सी ओवर हियर इज बीटा. नाउ क्लियरली वी कैन सी from here that if you want to find out the value of 10 beta, that can be easily found out, and that will be 10 beta is equals to, now here what is there we don't know, but we can find it out with the help of this triangle over here, which will be equal to opposite, that is h, upon adjacent, that is f. So we get 10 beta, which is equal to beta because the angle is very small. And so we can easily find out the magnification. Now the magnification is beta by alpha, which is h by f upon h by d. This h will get cancelled and you will get d by f. And so finally we get the magnification of the simple microscope when the image is formed at infinity equal to d by f. Notice that it is exactly 1 less, because in case of simple microscope we got 1 plus d by f, and over here we are getting d by f. So the magnification which we get when the image is formed at infinity is 1 less than the magnification we get when the image is at the near point. तो क्लियर बात यहाँ पर है ये है कि अगर हम नियर पॉइंट के ऊपर इमेज को लाएंगे तो हमें वो और ज़्यादा मैग्नीफाइड यानी बड़ी दिखेगी, बट देन थोड़ा सा हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेन हो सकता है. बट अगर हम इमेज को इन्फिनिटी पर देखें तो थोड़ी सी मैग्नीफिकेशन में कमी होगी, 1 लेस होगा, बट हमारी आंखों पे स्ट्रेन भी कम पड़ेगा. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप.